I may add that this was an extremely complex project because BLOs are the front line with all the scale and diversity of what the commission does coming to the fore in terms of number, in terms of the languages involved, in terms of the first point of interaction with the election with the electors. So the difficulty of conceptualizing a magazine which can fairly capture the scale and diversity was a challenge in itself. And I must say that with all the discussion taking place and guidance of the commission, the format has come out well. But of course, it's a format which is in perpetual evolution. And as we go along and we learn, we will always change it and improve on it. I look forward to the special interactive session which follows, and then of course the open session of Blo E Patrika, and would like to assure on behalf of the commission and all the officers, especially senior officers of the commission, that the BLO's contribution goal of the cadre at large is something which is of very high value and significance to the capacity of the ECI itself to deliver electoral outcomes, as well as the vital task of updating and maintaining purity of electoral rolls, among others. Thank you so much, and once again, very best wishes for the evening's electoral. Thank you. Thank you, sir. डिविजनों हमने एक छोटी सी कोशिश की है आपके कार्य, आपकी प्रतिबद्धता, आपकी कर्मनिष्ठा, आपके रिस्पॉन्सिव और रिस्पॉन्सिबल नेचर, आपके अपने प्रयासों को फोटोग्राफ्स के माध्यम से और उन फोटोग्राफ्स को फिर फिल्म के माध्यम से हमने फिल्म में कड़ीबद्ध कर हमने ये कोशिश की है. तो आइए देखते हैं ये फिल्म. You actually stand as the foot soldiers of democracy. Once again, thank you to you. And now we have the most awaited moment of this event, where we are now going to be having the interactive session. और जैसा कि आपको पहले बताया गया, आपके जो अनुभव रहे हैं, जो कुछ अचीवमेंट्स हैं, आप भी शेयर करना चाहें हमारे साथ, तो यू मोर देन वेलकम. यहाँ पर जो उपस्थित हैं और जो BLOs हमारे साथ कनेक्ट भी हुए हैं, उनको भी हम उनके विचारों को भी जानना चाहेंगे. तो कमीशन मैं लेना चाहूँगी हमारे ऑनरेबल कमीशन की. इसके साथ यदि हमारे साथ दिल्ली से यहाँ पर कोई है तो अच्छा, आपके वहीं पर माइक होगा. आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करें. इसके मैं दिल्ली से मीनाक्षी पटल BLO PS 147 KC 13 Dolini. I am in education department, from education department. My total number of voters was 715, out of which 590 जो है voter IDs I have linked with Aadhaar, 89 shifted, and 21 they are not willing, and 4 are absent. And after that I will tell you कि मैंने ये प्रोसेस जब स्टार्ट किया, ये कंपेयरिंग स्टार्ट की, तो स्टार्टिंग में तो स्मूथली हुआ, फिर मुझे कुछ चैलेंजेस आने स्टार्ट हुए. लोगों ने कहा, जैसे आई एम अपॉइंटेड एज अ BLO फ्रॉम लास्ट 8 years, तो जो एक लिंक फैमिली जैसे बन गए थे, उन्होंने तो मुझे इजीली आधार दिया. बट जहाँ पे चैलेंजेस आने स्टार्ट हुए, लोगों ने प्रॉब्लम देनी स्टार्ट की कि हम आधार नंबर नहीं देंगे,
उस टाइम पे मैंने लोकल बॉडीज से हेल्प ली, वहाँ के फॉर एग्जाम्पल RWS की हेल्प ली मैंने, उन्हें उनके व्हाट्सएप ग्रुप में अपना नंबर ऐड करवाया, जो भी मेरे को डायरेक्शंस CO दिल्ली की तरफ से आती थी उसमें मैं शेयर करती थी, और जो भी जैसे पैम्फलेट पोस्टर्स जो भी थे वो मैंने वहाँ पर दिल्ली में जो मेरा एरिया है वहाँ पे डिस्प्ले किए, और उससे थोड़ा सा अवेयर हुई पब्लिक, और टाइमली मैं डोर टू डोर जाकर मैंने ये कंपेनिंग की। फिर मेरे पास चैलेंजेस वहाँ के जो RW के मेंबर्स थे, उन्होंने मुझे कहा मैम ये क्यों जरूरी है। फॉर दैट मैंने उन्हें बताया कि दिस इज, ये जो कंपेन CO दिल्ली की तरफ से चल रहा है, वोटर ID का आधार कार्ड के साथ लिंक, इसका एक तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जितने भी हमारे मल्टीपल रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनको वीड आउट करना है, डुप्लीकेसी खत्म करनी है, तो इसमें हमें आपका सहयोग चाहिए। उन्होंने ये बात सुनकर उन्होंने मेरे पूरा कोऑपरेट किया, और इसके बाद मैंने वहाँ पर जितने भी वोटर्स, जहाँ पर जो मुझे क्वेश्चन बहुत हुए, बहुत क्वेश्चन मुझे उनका सामना करना पड़ा कि मैम ये करने से क्या होगा, तो हाँ ये तो स्वैच्छिक है, इट्स नॉट कंपल्सरी। तो फिर मैंने उनको मोटिवेट करने के लिए ये बताया कि एज एन इंडियन सिटीजन इट्स योर ड्यूटी ऑल्सो, आप इतना रोल तो प्ले कर सकते हैं कि आपने इलेक्ट्रल रोल जो है वो अपडेट हो, इलेक्ट्रल रोल अपडेट होगा जिससे जितने भी डुप्लीकेसी है खत्म होगी। तो ये एज एन इंडियन सिटीजन आप इतना थोड़ा हेल्प कोऑपरेट कीजिए। तो उन्होंने मुझे पूरा कोऑपरेट किया, और मुझे ऐसे कोई चैलेंजेस फिर धीरे धीरे मेरे को ओवरकम करती चली गई। फिर एज आई एम इन एजुकेशन डिपार्टमेंट इन स्कूल, तो जितने भी परसेप्टिव वोटर्स एंड यंग वोटर्स हैं उन्हें मैंने स्कूल में बच्चों को मोटिवेट किया। तो जैसे वहाँ पर PTMs वगैरह होती हैं, पेरेंट्स आते हैं, उन्हें कन्विंस किया कि आप जितने भी न्यू वोटर्स हैं, आपके बच्चे हैं, उन्हें रजिस्टर कराइए, उन्हें फैसिलिटी देने को बताया, उन्हें एजुकेट किया कि आप थ्रू योर वोटर हेल्पलाइन ऐप उनके फ़ोन पे डाउनलोड करवाएं, और उनको रजिस्टर करवाने के लिए उनको मैंने मोटिवेट किया और उनको नॉलेज दी और वोटर एजुकेशन उनको बताया। इससे भी मुझे और क्वेश्चन आए कि मैम अगर हमें शिफ्ट होना है तो कौन सा फॉर्म है, इसके बारे में भी मैंने उनको जानकारी दी कि कौन सा फॉर्म आप भर सकते हैं। और इसके बाद मेरे पास एक क्वेश्चन और आया कि मैम कि जो 80+ वोटर्स हैं तो उनको हम क्या करें। फिर उन्हें मैंने बताया कि आप 80+ जो वोटर्स हैं उनका भी आप, कहीं मेरे पास ये भी प्रॉब्लम्स आए कि मैम हम इनको नहीं कराना चाहते, तो मैंने उन्हें यही उनको मोटिवेट किया कि आप लिंक कराइए, इलेक्ट्रल रोल जो है उसमें वो अपडेटेड इजीली हो जाएंगे, और इनको जो कहते हैं वोट देने तो जा नहीं सकते, तो मैंने बताया कि इनके लिए बैलेट वोट उसका प्रोविजन है, और तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करने का, और जो आपने चैलेंजेस भी फेस किए, खुद ही आपने उसमें से सॉल्यूशंस निकाल कर आपने लोगों के साथ शेयर किया, उन्हें प्रेरित किया कि वो आगे आए और वोट करें, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सेंट्रल इंडिया की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ BLO शेयर करना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस। हेलो, सादर नमस्कार महोदय। मैं नीरव शर्मा उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के UPS बागराना कॉलोनी में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ, और महोदय मैं पिछले 10 वर्ष से BLO की ड्यूटी अपने भाग संख्या 144 में कर रही हूँ। महोदय मेरा जो अपना अनुभव है उसके लिए तो मैं सादर आपको धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे अवसर मिल रहा है यहाँ पर अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और इसमें मैं यही बताना चाहूँगी कि जब शुरुआत में मैंने ये ड्यूटी शुरू की थी तो उसके दौरान डोर टू डोर सर्वे करना और मतदाताओं का विश्वास जीतना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य हम शिक्षकों के लिए रहता है। लेकिन इसके लिए हमारे जो अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी में आते हैं विद्यालय में, उनका पूरा सहयोग हमने लेने की प्रयास किया, क्योंकि हमारा जो विद्यालय क्षेत्र है और जो भाग संख्या का क्षेत्र है वो लगभग एक ही है, और जितनी भी भाग संख्याएं वहाँ पर है सभी के बच्चे वहाँ पर नामांकित हैं। हमारा जो विद्यालय है उसमें प्रदेश में सबसे ज़्यादा बच्चे नामांकित हैं और आसपास के क्षेत्र के सभी मतदाता अभिभावक के रूप में वहाँ पर आते हैं। तो हमने इसी का ही सदुपयोग किया और अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी में इन चीज़ों को ऐड किया, जिससे जो मतदाता हैं वो जागरूक हो और सशक्त बने और अपने अधिकारों के प्रति उनको जानकारी मिले। तो हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, करेक्शन कैसे करना है, आप अपने जो सूची में नाम आप कैसे देख सकते हैं,
वाटर हेल्पलाइन ऐप और गरुड़ ऐप के द्वारा हम कैसे कार्य करते हैं वो हम अपने शिक्षक संगोष्ठी में उन्हें बताया। और अपने विद्यालय के बच्चों के द्वारा भी मतदाता जागरूकता दिवस के संबंधित वीडियो बनाकर उनके प्रेजेंटेशन के उन्हीं के जनप्रतिनिधि के जो समूह में हम जुड़े हुए हैं उसमें हमने सेंड किए, जिससे उन्होंने देखा कि हमारे ही क्षेत्र के बच्चे हैं और कितनी अच्छी बात हमें सिखा रहे हैं। तो उसके जरिए भी हमने जागरूकता अभियान चलाया, क्योंकि मतदाताओं की शंकाओं का जो समाधान है वो एक संवाद से ही दूर हो सकता है। तो वो संवाद स्थापित करने के हमने बहुत प्रयास किए और हमारे इन प्रयासों में आने वाले टाइम में बहुत विस्तार होगा, इसका मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। धन्यवाद। आपके अनुभव और आपके प्रयासों के बारे में हमारे साथ ये जानकारी साझा करने का। और अब राजस्थान से हमारे साथ जो बीएलओ से। नमस्कार, सर्वे स्वप्निल पाराशर। मैं राजस्थान के विधानसभा क्षेत्र अलवर शहर के मतदान की संख्या 165 राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पिछले 5 वर्ष से बीएलओ के रूप में कार्य। सर, जब मैं पिछले 5 वर्ष पहले बीएलओ के रूप में मैं ज्वाइन किया तो चैलेंजेस मेरे सामने भी आए, लेकिन मेरे विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों और प्रॉपर प्लानिंग के दौरान मैंने उन पर मुकाबला किया। मैंने जैसा कि मैं उसी विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ तो इसका मुझे बहुत ही फायदा हुआ। विद्यालय में आयोजन होने वाले जितने भी समारोह थे, जैसे कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, हमारे विद्यालय की एसएमसी मीटिंग, पीटीएम मीटिंग आदि में हम अक्सर लोगों से हम रूबरू होते थे, जिसके में सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से हमने वोटर अवेयरनेस और मतदाता जागरूकता इनको प्रमोट किया। इसके अलावा जब बीएचए आई तो बीएचए से हमारा काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवा मतदाताओं को बीएचए के माध्यम से हम उन्हें वो स्वयं अपना कार्य कर सके, हम इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित कर सके। पिछले एसएसआर के दौरान मुझे मेरे पीआरओ कार्यालय के द्वारा 30 युवा मतदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य प्रदान किया गया था, जिसके विरुद्ध मैंने 39 मतदाताओं को न केवल जोड़ा अपितु उनके ई-एपिक उनके बीएचए के माध्यम से डाउनलोड करवाने में भी मैंने 100% सफलता हासिल की। एवं मुझे पिछले एसएसआर के दौरान कुछ स्कूल कॉलेजेस में भेजा गया, जिसमें मैंने वहाँ हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग बीएचए ऐप के की और यही प्रयोग मैंने मेरे अपने भाग संख्या में भी किया, जिससे मेरा काम बहुत ही आसान हो। सर, जैसा कि अभी बीएलओ पत्रिका में देखा कि हम बीएलओ एक मोटिवेटर है और एक गाइड है टू द कम्युनिटी। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीएलओ एक फाइटर भी है। सर, जब कोविड-19 आया, लॉकडाउन आया, तो उससे पहले तक हम केवल निर्वाचन संबंधी कार्य ही करते थे, लेकिन जब कोविड-19 लॉकडाउन में हमने क्वारंटीन, आइसोलेशन, इसके अलावा राहत कार्य और पब्लिक को करीब 27 लोगों को जो प्रवासी मजदूर मेरे एरिया में थे उनको हमने ट्रेन के जरिए से व्यवस्था करवा के जिला प्रशासन की सहायता से उन्हें उनके मूल राज्य तक पहुँचाने में मदद प्रदान की, जिससे उन लोगों का हमारे प्रति एक विश्वास बढ़ा। उस समय पहली बार ये एहसास हुआ कि हमारे देश में कोई भी आपदा अगर आती है तो सेना और पुलिस के साथ हम बीएलओ भी उनके कंधे से कंधा मिला करके फ्रंटलाइन पर खड़े हो सकते हैं। पहली बार हमने अपने आप को अपने लोकतंत्र की पहली सीढ़ी तो है ही, लेकिन हमने पहली बार ये महसूस किया कि हम एक सशक्त फ्रंटलाइन वर्कर्स भी हैं। तो मेरे परिवार को और खुद को मैंने बहुत गौरवान्वित महसूस किया। सर, डेथ वोटर्स को मैं मेरे पंचायत के डेथ रजिस्टर जो है मैं उससे ट्रैक करता हूँ और फील्ड वर्क के दौरान डोर टू डोर और मेरे विद्यालय में जितने भी बच्चे हैं उनको मुझे जानकारी मिलती है। तत्पश्चात मैं उनके नाम पर प्रकरणीय कार्रवाई करता, जैसा कि मेरे विद्यालय की शाला दर्पण पोर्टल और मेरे विद्यालय के द्वारा जो चाइल्ड रेटिंग सिस्टम सर्वे जो होता है हमारे हर साल का, उससे हमें 17+ और 18+ के बच्चों को ट्रैक करने में बड़ी आसानी होती है। वहाँ से हम डाटा लेकर के उन्हें जोड़ते हैं और आगामी एसएसआर 2023 में भी मेरी ये पहली प्राथमिकता होगी बच्चों को, युवा मतदाताओं को जोड़ना विद और जितनी भी महिला नवविवाहिता महिलाएं हमारे एरिया में आई हैं उनको जोड़ना मेरी पहली प्राथमिकता। इसी के साथ जितने भी संशोधन होते हैं वो बीएचए एक्ट में, क्योंकि मैं बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ, मैंने चुनावी पाठशाला डेवलप की आयोग के निर्देशानुसार ELC जो है वो है। फिर
उसमें यूथ जो वोटर्स हैं, मैंने हर घर में एक वोटर को व्हाट्सएप के माध्यम से और बीएफए डाउनलोड करवा कर उन्हें ट्रेन किया, तो आज निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त जितनी भी सुविधाएं हैं उन्हें वो स्वयं करने में सक्षम है, जिससे मेरा कार्य बहुत ही आसान हो जाता है। फिर उसमें कोई एरर की संभावना नहीं होती। लोगों का मुझ पर विश्वास बढ़ा है, उन्हें मुझे उनका प्यार, उनका सहयोग बहुत ही मिलता रहता है। मैं एक तरह से कहूँ कि शिक्षक होने के नाते मुझे बीएलओ होने का ही फायदा मिला, या मैं ये कहूँगी बीएलओ होने के नाते मुझे शिक्षक होने का फायदा मिला है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, इसी के साथ मैं इसी संकल्प के साथ कटिबद्ध हूँ कि कोई भी मतदाता पीछे ना रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर जो आप काम करते आए हैं, ना केवल मतदाता जागरूकता की तरफ, जैसे कि आपने कहा कोविड के मुश्किल समय में भी आपने अपना जो नॉर्मल ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा हटकर आपने खुद अपने पूरे मन से तन से आपने उनकी सेवाएं उन्हें दी और उन्हें उनके घर तक पहुंचाया। ये आपकी अपनी डेडिकेशन और पैशन को दर्शाता है। और अब हमारे साथ काफ़ी सारे बीएलओ जो ऑनलाइन जुड़े हैं, उनके भी विचारों को आमंत्रित करते हैं। इसकी तरफ जाते हुए मेघालय से कनेक्ट हो गए। Good afternoon, sir. My name is Sanat Pasaiman. I am the BLO of 21 Nankamai. Police station number name is 40 Noshidia, South A. I would like to share some of the challenges during my door-to-door visits. First of all, I would like to say that visiting the same house 8 to 10 times, since the Electoral is not available in time, I mean it's very time consuming because we have to do an inquiry about his or her whereabouts. In many cases, a risk of getting bitten by a dog. Animals are very unpredictable. They may suddenly appear and bite without barking. Some electors are moody, some are rough, some are requesting, some are welcoming, some are stubborn, unwilling to enroll, unwilling to vote, and so on. So visiting people's houses in the evening is also a problem because I represent from the urban level. When they are back home, they are tired, they wanted to relax, no disturbances. And again, to go in the morning before 10 is also very disturbing to them because they are all busy trying to get ready for work. And then during holidays, mostly they go out with their families and the house is locked. So these are the challenges. And throughout, as a BLO for many years, I've learned to try my level best to keep on trying to motivate them through whatever means I could do. And sometimes we have to try to educate them. We have to educate them in the manner that by creating the awareness, and then we educate them through Garuda app and Voters Hotline. And then at the same time, we have to build up this public relation. And that is how we get the love and trust through public relations. And we try to bring out a good approach. So yes, and through this, I feel so proud to be a BLO because sometimes I had to face lots of problems all those times, but then now I get the feedback from people that you have become a politician because you come door to door. We love you. Why don't you contest for elections? Then I tell them that actually I'm serving the ECI. I feel proud. Thank you so much, sir. Dhanyavad. Thank you for sharing your experiences and some of the challenges, but as you said that you have been able to overcome them, you have been able to motivate and inspire the voters and earn the love and respect of them. Thank you for sharing your experiences. और अब we move to Tamil Nadu. சார் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு தமிழ்ல தான் பேச போறேன் சார். அது வந்து சார் வந்து இங்கிலீஷ்ல சொல்லிருக்காங்க. Good afternoon, sir.
and I should talk in Tamil and be translated, sir. It's an honor to be here. இந்த வழிபடுத்திருக்கிற மாண்புமிகு இந்திய தேர்தல் ஆணைய அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I wish to let Sir be here. It's an honor to be here before the election commissioners of election commission of India. என்னுடைய பெயர் வந்து ஜி மனோகர். நான் வந்து சென்னை மாநகராட்சியில ஊழியராக பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கிறேன். I am G. Manohar. I am working and I am employed in the Greater Chennai Corporation in Chennai. நான் இப்போ தற்போதைய டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நகர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட பாகம் 227 இதுக்கான வாக்குச்சாவடி நிலையாளராக தற்போது பணிபுரிந்திருக்கிறேன். I am a BLO to part 227, which is comprised in number 11, Dr. Radhakrishnan Nagar, Assembly Constituency. என்னுடைய வாக்குச்சாவடி நிலை உட்பட்டிருக்க 227 இருக்கு. மொத்த வாக்காளர் எண்ணிக்கை 765. அதுல ஆண் வாக்காளர் 87, பெண் வாக்காளர் 77, அந்த திருநங்கை 1 இப்ப இருக்கிறது. இதனுடைய மொத்த வாக்காளர்களை இதுவரைக்கும் நான் அந்த ஆதார் பணியை வந்து வெற்றிகரமாக 98.5% நிறைவு பூர்த்தி செய்திருக்கிறேன். I have done 98.5% of Aadhaar linking among the total 765 electors in my part, of which 377 are female electors and 387 are male electors, and that there is 1 per gender elector. தற்போது இந்த ஆதார் பணியை தொடர்ந்து நடைபெற்ற இந்த சமயத்தில் வந்து நான் இந்த ஃபீல்டுக்கு போன இந்த நேரத்தில் அனுபவப்பட்ட அந்த ஒரு சில அந்த மெமரிஸ் வந்து இங்கே வந்து நான் ஷேர் பண்ணிக்க வந்து விரும்புகிறேன். During my field visit and to include people the Aadhaar linking, I just wish to share some of my experiences here. நான் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப நாளாகவே இந்த ஒரு 5-6 வருஷமா இந்த பிஏஓ இந்த பாட்டை எடுத்துட்டு இருக்கிறேன். ஸோ வந்து I did BLO in this part for the past 6 years. ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து இந்த தேர்தல் பணியை மேற்கொள்ளும் போது அடிக்கடி இந்த புதிய வாக்காளர்கள் வந்து பதிவு செய்வது, இந்த நீக்குதல், அடுத்த வந்து தேர்தல் போன்ற விவரங்களை வந்து மேற்கொள்ளும் போது நான் நேரடியாக எப்பவுமே களத்துக்கு சென்று புதிய வாக்காளர்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ஒரு வீடை வந்து அந்த நோட் பண்ணிக்கிட்டு அவங்களுக்கு வந்து தேவையான நடவடிக்கை வந்து நானே நேரடியாக சென்று அவங்களுடைய ஃபார்ம்ஸை கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு அவங்களுக்கு தேவையான எல்லாமே என்னுடைய மேலதிகாரிகளுக்கு தெரிவித்து நேரடியாக அவங்களுக்கு ஓட்டர் ஐடி நானே டிஸ்பேச் பண்ணி கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சில இது நான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன். ஸோ அது in my area, I go to all the places and I note down all the new people who are in that part, and I note down and I ensure that they all are registered, and any help regarding registration or other verification aspects or changes, I ensure that I go and do it personally, and I also connect them with our local election officers. ஸோ இதனால வந்து அவங்களுடைய எளிதாக வந்து அந்த வாக்காளர் மத்தியில் வந்து என்னால் கவர முடியுது. ஸோ அதனால வந்து இந்த ஆதார் பணியை வந்து நான் மேற்கொள்ளும் போது அவங்ககிட்ட வந்து நான் இந்த எடுத்து சொல்றேன், இந்த மாதிரி ஆதார் கட்டாயம் இல்லை என்று நம்முடைய ஆனந்தம் சொல்லப்பட்டால் கூட நான் வந்து பர்சனலாகவே இந்த ஆதார் இணைக்கிறதுனால என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து எடுத்து சொல்லி இதை வந்து நீங்க இணைக்கிறதுனால வருங்காலத்தில் ரொம்ப வந்து நம்ம இரட்டை பதிவு இந்த மாதிரி நம்முடைய வாக்கு வந்து யார் வந்து தவறுதலாக பயன்படுத்தக்கூடாதுங்கிற அந்த ஒரு இதெல்லாம் நான் எடுத்து சொல்லி நீங்க ஆதார் கொடுங்க இது நல்லதுன்னு சொல்லி அவங்ககிட்ட நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். Because of my ability to have a good connection with all the people in my part, I was able to go and reach out to nearly everybody, and I explained to them that if we have our Aadhaar card is linked with the voter ID, then there will be the aspect of duplicacy and all those other aspects will be cut down, and so everybody was very encouraged to get themselves linked to the voter ID. இப்போ வந்து அதிகபட்சமாக படிப்பறிவு இருக்கிற அந்த பசங்களாம் அந்த வீட்டில் அதிகமாக இருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாணவர்களுக்கு அவங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு எடுத்து சொல்லிட்டு நீங்க தான் இந்த ஃபேமிலி இருக்கிற பேரண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கிற ஃபெசிலிட்டி சொன்ன உடனே அவங்களால வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நான் இந்த ஆதார் கனெக்ஷன் வந்து இப்பதான் வந்து இந்த ஆதார் கார்டு வந்து நான் பெற்றுட்டு இருக்கிறேன். இதனால இப்படி தான் என்னால் அச்சீவ் பண்ண முடியுது. My work is among the urban area in Chennai, and there are a lot of educated youngsters, and so I reach out to the youngsters and I explain to them about the positive aspects of linking of Aadhaar to voter ID, and so they help in informing their parents and educating their parents,
And so that is why I was able to complete nearly 98.5% of linking of Aadhaar to the voter ID in my pathway. இப்போ இப்படி தொடர்ந்து நம்ம இந்த ஆதார் பணியை வந்து வெற்றிகரமாக முடிச்சிருக்கிறேன். இதுல இருக்கிற ஒரு சில குறைபாடுகள் வந்து லாஸ்ட் டைம் வந்து மாண்புமிகு ஆணையர் அவர்கள் சென்னை விசிட் வந்தப்போ அவருக்கு தனிப்பட்ட முறையில் இந்த பிஎல்ஓஸை வந்து மீட் பண்ணப்போ நம்ம எங்களுடைய குறைகளை வந்து நம்ம அவர்கிட்ட சொல்லியிருந்தோம். இந்த ஆதார் சம்பந்தப்பட்ட குறைகள் வந்து ஒரு 3 குறைகள் சொல்லியிருந்தோம். சார் வந்து உடனடியாக மறுநாள் வந்து இந்த நிவர்த்தி செய்து கொடுத்திருக்காரு. அதுக்காக அவருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். முதலில் during our work, we faced some challenges, and like I also wish to say that our Honorable Election Commissioner visited Chennai on 27/8, and he had a discussion with some of us, and so we were able to tell him our problems. And so, sir, regarding the certain key aspects, we told him, and sir was very kind enough to immediately take steps. And by the next 2 days, everything, the next day, one issue was resolved, and all the others. So we are really bound that we are very thankful to sir for taking such immediate care for us. And so we are really honored, sir, and because of that, I've been able to finish 98.5%. அந்த ஒரு இதுல ஒரு முக்கியமான ஒரு சொல்லணும்னா, இந்த ஆதார் வந்து இணைப்பு நம்ம ரெட் ஆப்ல வந்து நம்ம மேற்கொண்ட பணியில வந்து முதல்ல ஸ்டார்டிங்ல எத்தனை பேர் நம்ம இணைச்சிட்டோம், யார் இணைக்கலன்றது அந்த ஒரு டேட்டா இல்லாம இருந்தது. அதை வந்து நாங்க சாரோட கவனத்துக்கு எடுத்து சென்றப்போ வந்து சார் வந்து அதை மறுநாள் எனக்கு நிவர்த்தி செய்து கொடுத்திருக்காரு. ஸோ இதெல்லாம் first point was in the Garuda app, like we did not have, previously we did not know about how many we had completed and from our part and how many more we listed. And so we had raised this issue to sir, and sir immediately took note of it, and he immediately helped us. And so by within the next days, this details were available. So thankful to you, sir, for immediately taking care of that. உண்மையாகவே என்னுடைய அந்த வாக்குச்சாவடி நிலையர் என்ற அந்த ஒரு பதவி இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து பெருமிதமாக இருக்குது. ஏன் சொன்னா ஜனநாயக இந்தியாவில் ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் வந்து ஒரு வாக்குரிமை என்பது தங்களுடைய அடிப்படை உரிமைகளையும் தங்களுடைய வந்து பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக ஒரு உரிமையா இருக்கிறது இந்த வாக்குரிமை தான். அப்படிப்பட்ட வாக்குரிமையை பெற்றுத்தருவது வந்து இந்த பிஎல்ஓ, அதாவது பூத் லெவல் ஆஃபீஸர், இந்த எங்களுடைய பணி அடிப்படையாக இருக்கிறதுனால உண்மையாக நான் இதை பெருமிதமாக கொள்கிறேன். Voting is every individual's right, and as a PLO, I'm really honored to be able to help individuals in my part and other places to ensure that they get the right to cast their vote and be democratic. எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பு வழங்கிய மாண்புமிகு ஆணையர் அவர்களுக்கும், நம்முடைய தமிழ்நாடு சீஃப் ஆணையர் அவர்களுக்கும், மற்ற அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். I'm really thankful for being able to express my views and experiences. I'm thankful to the Commission and also for our Chief Electoral Officer for giving me this opportunity. Thank you for sharing with us your achievement, the great work which you are doing at the ground level, especially towards connecting the epic card with the Aadhaar. Keep up the good work. Thank you. And now let me invite Guru from Himachal Pradesh. नमस्कार सभी को। मेरा नाम राजेश चौहान है। मैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला 63 का बीएलओ हूँ, भाग संख्या 40। तो शिमला के हाईएस्ट पॉइंट पे जापुर पे स्थित है, उसका बीएलओ हूँ। मैंने अपने क्षेत्र के सभी मतदाताओं को पंजीकृत कर दिया जो पात्र मतदाता है। जैसा कि इलेक्शन कमीशन का मोटो है, कोई भी मतदाता न छूटे। तो मैंने अपने सभी पात्र मतदाताओं को इसमें इलेक्टोरल पे जोड़ दिया है। खासकर जो इसका इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो साल में उन्होंने 4 तिथियां दी है, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और एक जो 18 साल के मतदाता हो रहे हैं उन्हें जोड़ने की। तो पहले क्या होता था, 1 साल का एक ही होता था हमारी तिथि 1 जनवरी। तो मेरे इसमें 2 बच्चे वो है, उनको मैंने जोड़ा है 18 साल के। वो इतने खुश हुए कि हम भी इस बार अपना मतदान कर सकेंगे। और मैंने 3 अपने जो नए बच्चे हैं उनको भी चिन्हित किया है, जो अभी दिसंबर में 18 साल के हो जाएंगे, और उन्हें BHA ऐप को डाउनलोड करवाया है कि अपना आपने खुद रजिस्ट्रेशन करना है। अगर कोई मदद की जरूरत होगी तो उनको अपना नंबर दिया है कि आप मेरी सहायता ले सकते हो। और जहाँ तक आधार लिंकेज का सवाल है, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से वहाँ का बीएलओ हूँ,
मुझे सभी लोग निजी तौर पर जानते हैं और इसी अवसर का लाभ उठाते हुए मैंने सबसे निजी तौर पे घर पे जाके अपने जो बूथ का है 93% आधार लिंकेज कर लिया है। जो बाकी बचे हैं उनको भी समय कर दूंगा। सर सबसे बड़ी बात है कि घर घर जाके मैंने अपने इलेक्टोरल को त्रुटिपूर्ण बनाया है, कोई भी उसमें भी हेल्दी रोल बनाया है अपने भाग का, और उनको मोटिवेट करके लोगों को आधार लिंकेज करी है कि इसमें आपका जो नंबर है वो गुप्त रखा जाएगा, इसमें कोई भी इसको बाहर नहीं देख सकेगा। हमारे ईसीए का डेटाबेस जो है उसमें ये गुप्त रहेगा। तभी लोगों ने अपने आधार नंबर दिया। मैं प्रणित मिशन का लक्ष्य पूरा करने में सफल रहा हूँ। सर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अपने अचीवमेंट्स और अनुभव को हमारे साथ साझा करने का, और विशेष रूप से जो आप एलिजिबल सिटीजन्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर उन्हें इंस्पायर और मोटिवेट कर रहे हैं वोट करने की तरफ। उनके जिन का जो काम कर रहे हैं आधार को एपिक से लिंक करने का, उसका हमें जानकारी देना है। और अब गुजरात की तरफ रुख करते हैं। गुजरात से मैं नमस्कार माननीय सर, मैं सुभाषिनी पटेल गुजरात में बड़ोदरा शहर में 145 मांझरपुर विधानसभा में जो सभी के लोगों को सबमिट किया और सभी को मैंने फॉर्म वितरण किया और उन्हें फॉर्म भरने में क्या क्या दिक्कतें आ रही है वो भी जानी, और दिक्कतों को जो मेरे से संभवतः निराकरण था वो भी मैंने करने की कोशिश की। और ये सारा काम मैंने पूरे दिन में किया और वीकेंड में वहीं पे सोसाइटी में ही जा करके और रह करके और सारे फॉर्म मैंने कलेक्ट किए। तो जो वहाँ के जो प्रमुख थे उनका भी मुझे इसमें बहुत सहयोग मिला। जो प्रमुख थे उन्होंने जो सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी मुझे इंक्लूड किया, जिससे जो भी कैंपेन के लगते जो भी प्रचार प्रसार था वो सारा मैं करवाई। और इसके दरमियान मुझे कुछ चैलेंजेस भी आए, जैसे कि अभी ऐप जो है वो नया आ चुका है और फॉर्म भी जो है वो नए आ चुके हैं। तो नए तरीके से हमें सब कुछ करना था तो वो हम कैसे करें, तो वो भी हमारे सामने चैलेंज था। पर एक्चुअली वो चैलेंज और साथ साथ में हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी थी, क्योंकि जो अब नए फॉर्म है वो काफ़ी सरल हो चुके हैं पहले की बजाय। तो मतलब थोड़ी सरलता रही और हमें भी सरलता रही। साथ में जो एजुकेटेड है तो उन्हें मैंने वोटर हेल्पलाइन के बारे में भी बताया, जिससे करके वो उनके घर में अगर किसी का कोई एनरोलमेंट में सुधार करना है या फिर नए एनरोलमेंट करने हैं तो वो अपने आप कर सकें। इसके सिवाय जो PWD उम्मीदवार थे तो उनके घर पे जाकर के मैंने 8 नंबर के फॉर्म भरवाए, जिससे करके उन्हें जो एक्स्ट्रा सुविधाएं जो प्राप्त होने वाली है वो उनके बारे में भी उन्हें अवगत किया, जिससे उन्हें बहुत खुशी हुई और उन्हें ये जानकर भी बहुत आनंद हुआ कि इलेक्शन कमीशन हमारे बारे में ये सोचता है। इसके बाद में जो 18 अब जो उम्मीदवार थे उन्हें जाकर के घर पे ग्रेटिट्यूड लेटर भी हमने प्रदान किए और वो भी इससे बहुत ही प्रभावित हुए कि हमको इस तरह से पहली बार ही सम्मानित किया गया है। इसके बाद में जो नए मतदार हैं जो कि 1-10 से 1-10-22 से जो नए मतदान हो रहे हैं, मतदाता बन रहे हैं, तो उन्हें मैंने वोटर हेल्पलाइन के द्वारा खुद के ही फॉर्म भरने मैंने सिखाया। उन्हें जहाँ जहाँ दिक्कतें हो रही थी वो उसका मैंने सॉल्यूशन किया। और वहाँ के जो प्रमुख थे, जो सोसाइटी के जो भी प्रमुख थे, उन्होंने भी मुझे बहुत ही सपोर्ट किया इस बारे में और उन्होंने मुझे बहुत बहुत धन्यवाद भी किया कि इस तरह से हमारा जो भी प्रोग्राम था वो बहुत ही आसानी से सरलता से पूरा हो जाए। थैंक यू। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपने अचीवमेंट्स को हमारे साथ साझा करने का। जो आपको चुनौतियाँ भी आई बनाते हैं, चुनौतियों को कैसे अवसर में तब्दील किया और वोटर्स को इंस्पायर किया, एजुकेट किया, अवेयरनेस की तरफ जो आपका जो अथक प्रयास रहे हैं वो हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। और अब रुक करते हैं बिहार ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश। मेरा नाम कौशिक, मैं शासकीय हाई स्कूल महेश्वर जिला रायसेन मध्य प्रदेश में शिक्षक पद पर कार्यरत हूँ मैडम जी। और मैं 115 मतदान केंद्र मध्य प्रदेश का BLO हूँ। लगभग 20 वर्षों से मैं BLO का काम देख रहा हूँ। सबसे पहले मैं इलेक्शन कमीशन इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि देश के तमाम हमारे जो BLOs हैं उनको एक नया प्लेटफॉर्म दिया है, और हाँ मैं इलेक्शन कमीशन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।
और मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ भी बीसी में मुझको यहाँ बुलाया। मैं आपके सामने ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ मैंने कैसा कैसा जो काम किया है उसके बारे में पहला बिंदु है कि मैंने जो घर पर आधार संग्रहण के लिए फॉर्म 6 भी भरा है, वो घर जाकर बांटा है और प्रत्येक मतदाता है उससे मैंने हस्ताक्षर लिए हैं और उनको कुछ शंकाएं हो रही थी कि हमारा आधार सार्वजनिक होगा, तो इसके लिए मैंने उनको बताया कि नहीं, हमारे जो रजिस्ट्रेशन अधिकारी हैं वो जो आपके 12 डिजिट के आधार नंबर उनमें से 4 रखेंगे और बाकी को वो क्रॉस करके, तो जो 6 की फॉर्म है वो भर के हमने रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बरेली के पास जमा कर दिए हैं, वो सुरक्षित है। दूसरा बिंदु ये है कि 6 की फॉर्म कंप्लीट है हमारे और भर गए हैं, उनको हमने सुरक्षित जमा कर दिए गए हैं। तीसरा बिंदु हमारा है कि जो स्वीप कार्यक्रम है उसके अंतर्गत ग्रामीण शालाओं से अपने बच्चों को एकत्रित किया और उनके द्वारा गांव में रैली निकलवाई गई, नारे लगवाए गए, स्लोगन लिखवाए गए, जिसके माध्यम से गांव के अंदर मतदाताओं में एक जागृति आई और उन्होंने हमको सहयोग दिया। तीसरी बात ये आई कि जो मतदाता सूची है उसका शुद्धिकरण करना, उसके लिए हमने एक चौपाल तैयार की गांव में 2-3 जगह जाके, जो हमारे वृद्धजन है, चूंकि मैं लगभग 40 साल से उसी गांव में शिक्षक पद पर काम कर रहा हूं, तो मुझे कोई ज्यादा कठिनाई नहीं, क्योंकि इस बात को हमारा मतदाता मानता है। मैंने उनके साथ जो मृत्यु हुई है या जिनको गांव से बाहर चले गए हैं उनके नाम सूचीबद्ध किए और सूचीबद्ध करने के बाद उनको बताया कि इनके नाम हमको इस मतदाता सूची से निकालना है, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। तो सभी जो हमारे ग्राम पंचायत के जो हमारे सम्मानीय जन हैं उन्होंने हमको स्वीकृति दी और वो सूची है। अब जो एएसटी मतदाता है उनको हम अलग करके आने वाले समय में मेरी जो मतदाता सूची है उसमें 592 वोटर थे और उनको मैंने 592 को कंप्लीट कर लिया है गरुड़ा ऐप से, उनके नाम जोड़ दिए गए आधार लिंक से और मेरा काम 1 सितंबर को 100% हो गया। तीसरा एक और बिंदु मेरे पास है कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय जो मेरे पास में बैठे हुए हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर एक बहुत ही अच्छा नवाचार किया है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ हमारे इंडिया के जो इलेक्शन कमिश्नर महोदय हैं उनके सामने और पूरी टीम के सामने कि जो 100 वर्ष से अधिक के जो मतदाता हैं हमारी सूची में, जो मतदाता सूची है उसमें उनके नाम को उन्होंने निकलवाया और उनकी लिस्ट बनवाई और लिस्ट बनवा के वो एक सम्मान ऐप है, उनके सम्मान ऐप पर उनके नाम दर्ज करवाए और उसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया और हमको निर्देशित किया कि आने वाला जो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है जो 1 अक्टूबर को 2022 को मनाया जाएगा, उसमें माननीय हमारे जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय हैं उन्होंने हमको निर्देश दिया कि आप सभी बीएलओ जो मध्य प्रदेश के जितने भी बीएलओ हैं वो हमारे जो सीनियर सिटीजन है जिनकी आयु 100 से ऊपर है उनके घर घर जाकर आप उनको सम्मानित करेंगे। तो मैं बिल्कुल आपके सामने वचनबद्ध हूँ और हमारे माननीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय के सामने भी वचनबद्ध हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में हमारे जो वृद्धजन है उनके घर घर जाकर हम उनको सम्मानित करेंगे। मेरी योजना है, मैं महेश्वर से बिलोंग करता हूँ गाँव से, तो मैं घर घर जाकर जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट जितने मेरे गांव में 3 पोलिंग स्टेशन है और लगभग तीनों में जो भी हमारे वृद्धजन हैं उनको हम घर जाकर सम्मानित करेंगे। दूसरी बात, मैंने गांव के अंदर चूंकि मैं बहुत दिनों से वहाँ काम कर रहा हूँ तो मैंने जितने भी वोटर्स हैं उनका एक मोबाइल पे एक वोटर्स ग्रुप तैयार कर लिया है। जो भी मैं जानकारी देता हूँ एक नंबर पे क्लिक करता है एक ग्रुप पे, तो उनको जानकारी मिल जाती है और लगभग सभी जो जानकारी मैं चाहता हूँ वो मैं घर जाकर भी लेता हूँ और नहीं ले पाता तो शाला में मेरे विद्यार्थी जो एक्सिस स्टूडेंट हैं वो मुझको सरलता से वो चीजें उपलब्ध करा देते हैं। और मैं पुनः इलेक्शन कमीशन भारत का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पहले हमको जितने भी बीएलओ होते थे उनको बहुत समस्याएं आती थी कि एक ही तिथि में हमको सब कुछ सबमिट करना पड़ता था, लेकिन आज हमको बहुत अच्छा अवसर दे दिया गया है। हमको 4 तिथियां दे दी गई हैं, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, जिनमें देश के तमाम बीएलओ इस कार्य को और अच्छा कर पाएंगे। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे कमीशन महोदय को कि उन्होंने जो 4 तिथियां हमको निर्धारित की हैं जिनमें हम इस काम को बहुत ही सरलता से कर पाएंगे। दूसरी बात और भी है मेरे सामने कि जो आने वाले जैसे 9 नवंबर के बाद जो नाम जोड़ना है उनके जो 18 वर्ष के हमारे मतदाता होने वाले जो
20 विद्यार्थी हैं जिनका नाम साला के रजिस्टर में लिखा हुआ है, उनकी डेट ऑफ बर्थ उसमें लिखी हुई है, तो वो मैंने खुद रजिस्टर में उनको मिस्टेक कर लिया है और आने वाले जो 9 नंबर का दिन है उसके बाद से उनको हम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए ये काम आसानी से हो जाएगा। मैं देश के तमाम जो हमारे PLO हैं उनसे कहना चाहता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ कि पहले से ही ऐसे नामों को रजिस्ट्रेट कर ले और ये काम बड़ी आसानी से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज इसी में बुलाने के लिए। पुनः मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ ये सभी जानकारी यहाँ पर हमारे साथ शेयर करने का, और जो आप जमीनी स्तर पर लोगों में एक जागरूकता पैदा कर रहे हैं वो हमारे साथ साझा करने का। जैसे कि आपने बताया मध्य प्रदेश में आपने काफ़ी सारे नए इनिशिएटिव लिए हैं विशेष रूप से, तो वो भी हमें उसकी जानकारी देने का, और यकीनन यहाँ पर भी सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा किस तरह से वो अपने यहाँ पर भी इसको एडवोकेट कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद। तो पुनः धन्यवाद सभी का, सभी PLOs जिन्होंने यहाँ पर जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्होंने अपने विचार और अपने सुझावों को साथ साथ अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर किया, वो हमारे साथ ऑनलाइन कनेक्ट हुए। और अब हमारे साथ कुछ 10 लाख से ज़्यादा PLOs कनेक्ट होने जा रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। सभी का विशेष रूप से अभिनंदन हमारे कमीशन की तरफ से, हमारे सभी अधिकारीगण की तरफ से, यहाँ पर उपस्थित सभी की तरफ से। So let me extend greetings to all who have joined us on our ECI YouTube channel. Thanking all of you for taking our time and being a part of this very important session, which in fact has been organized especially for all of you. For the objective of this session which we have, or the event which we have, is more towards knowing from you your experiences, and so that we can all work together towards ensuring that no voter is left behind, ensuring that the elections become more inclusive, participative and accessible. And as you share your experiences with us, we come to know what more can be done for further facilitating voters. So this, I will also, as all of us, almost, as I said, 10 lakh PLOs have joined us. Let me mention to you that joining us here on the day is Manini Mukhi Chunav Ayog, Shri Rajiv Kumar ji, Shri Anuj Pandey ji, Manini Chunav Ayog, मंच पर हमारे साथ हैं श्री धर्मेंद्र शर्मा जी, सीनियर उप चुनाव आयुक्त, श्री नितेश व्यास जी, सीनियर उप चुनाव आयुक्त, श्री R.K. गुप्ता जी, डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर, डॉक्टर नीता वर्मा, डायरेक्टर जनरल, और मिस शिफाली बी शरद, डायरेक्टर जनरल। This event, in fact, would like to mention, in fact, I'm reiterating, but it stands as a very thoughtful gesture of the Commission towards inviting all the 10 lakh plus PLOs on one platform. You all of you stand as actually the custodians of the polling booths. You stand as a very fundamental link between the Election Commission and the voters. You stand as one of our most important representative at the grassroots level, and you stand as a friend, philosopher, guide of for the voters. So thank you for joining us. और इनफैक्ट हम अनुभवों को आमंत्रित करते थे, उसमें हमने सुना कि किस तरह से आप में से काफ़ी सारे लोग अपने रेगुलर जॉब के साथ साथ आप ये ड्यूटी निभाते आए हैं बहुत ही मन से, in spite of the various challenges, in spite of some limited resources. Also, you have been going door to door. Even during the festivals, in your holidays, you have been giving in your time, and that again reflects your passion and dedication. तो इसी को सुभाषित करते हुए हमने एक और कमीशन पहल लेने जा रहा है आज, और ये है एक ई पत्रिका को लॉन्च कर। ये एक बाई मंथली BLO ई पत्रिका है जो आज कमीशन द्वारा यहाँ पर लॉन्च की जाएगी। ये ई पत्रिका आपके काम, आपके समर्पण, आपकी प्रतिबद्धता, विशेष रूप से जमीनी स्तर पर आपके मुद्दों को समझने की जो आपकी काबिलियत है, उसको
सराहते हुए आपको समर्पित है. It's to appreciate, to motivate, and to orient the BLOs towards their duties and activities. It is a note to the BLOs who have been working relentlessly ensuring that the biggest festival of democracy is celebrated in the true spirit. ई पत्रिका का जो पहला संस्करण आज यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा, इसके पहले संस्करण में मतदाता सूची की तैयारी, संशोधन, रखरखाव के प्रति BLOs के एफर्ट्स की झलक शामिल है. ये पत्रिका में विशेष रूप से जमीनी स्तर पर BLOs के दिन प्रतिदिन के अनुभव, उनके दृष्टिकोण और उपलब्धियों को शामिल किया गया है. ये पत्रिका BLOs के माइलस्टोन अचीवमेंट्स पर भी प्रकाश डालता है. Especially what we heard also that the BLOs in various districts have been taking initiatives and they have been able to achieve that milestone of 100% linking the Aadhaar with the EPIC. That is also highlighted here. In fact, 2 examples are there in this patrika. In this patrika also highlights the recent electoral reform actually affected and impacted at the ground level also. Some of the big success stories from the ground zero have been highlighted, how the BLOs have been able to blend the website votes and the electoral strategy to enroll maximum eligible citizens to vote, and this we have highlighted. और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर भी है इस पत्रिका में, जो कि है बातों बातों में. एक सेक्शन है और जैसे कि नाम से ही पता चलता है, बातों बातों में ही BLOs अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं. एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहानी के माध्यम से, which becomes also more very absorbing and immersive. So their own experiential views they have tried to reflect in this section of बातों बातों में. एक इंटरैक्टिव पत्रिका भी है, जब लॉन्च की जाएगी हम आपको दिखाएंगे भी कि किस तरह से ये इंटरैक्टिव है. यदि आप एक लिंक पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर वो प्ले हो जाएगा और उसमें आप सुन सकते हैं कि उनके अपने एक्सपीरियंसेस में जैसे शेयर कर रही हैं. तो मैं हमारे ऑनरेबल कमीशन उनसे निवेदन करना चाहूँगी कि वह रिमोट का बटन दबाकर अपने करतब्यों द्वारा इस बाई मंथली BLO की पत्रिका का विमोचन करें. We dedicate this patrika to almost 10 lakh plus BLOs, as you can see. ये आप थोड़े से पेजेस इसको फ्लिप करें. यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि we have the messages from the CC and PC, the editorial committee, the booth level officers. Here again your activities which you have been doing. We have the milestone achievements which you have been able to cover. As I mentioned, 2 examples have been cited here, reflected here. Further, we have the smart BLOs, the app के माध्यम से जो आप information share करते आए हैं. Stories from the ground zero. These are very success stories. I'm sure as you go through them, there are lot many new ideas which you will be able to yourself garner and gather, which you can take it and do it at your levels. Baaton Baaton mein, again this is, it has been shared by one of the BLOs, his experience joining, shooting. कुछ नहीं पता था, धीरे धीरे उन्होंने भी ग्राउंड लेवल पर कैसे सीखते गए, and he has been able to motivate, inspire people. Yes, as we heard also, earn the love and respect of the people. अगले यहाँ पर आधार एप्लीकेशन की तरफ जो हमारा ये ऐड है वो दिखाया गया है. आपको जैसे मैंने बताया कि ये एक इंटरैक्टिव मैगजीन है, तो किस तरह से इंटरैक्टिव है, यदि हम उस पेज पर जा सके क्लिक कर मेरा नाम पूजा संजय है. मैं BLO हूँ, मेरे वोटर्स का व्हाट्सएप पे प्रोफाइल ग्रुप बनाया हूँ. उससे मैं वोटर्स को सब विषय का भेजा हुआ मैसेज उनको देखता हूँ और उनको बोलता हूँ कि अभी आधार ड्राइव चालू है, आप अपना वोटर ऐप डाउन कर सकते हैं या NSP या वोटर पोर्टल से या वेबसाइट पे जाके लिंक कर सकते हैं. कुछ लोगों को डिफिकल्टी होती है, वो लोग मैसेज करते हैं कि उनका आपके घर पे आपकी आधार लेके जाइए और लिंक करिए. तो मैं उनको जब उनके घर जाता हूँ, आधार डिटेल लेता हूँ, फॉर्म फिल करता हूँ,
मेरी बड़ोड़ा हेल्थ में हूँ, उनका डिटेल करके लिंक करके उनको मैसेज भेजता हूँ कि आपका लिंक हो चुका है। और लोगों ने मेरे इस राय को ध्यान देके मेरा हर काम इतना आसान किया है कि लोगों ने अपना अपना काम ऑनलाइन भी किया है, कभी मुझे आधार व्हाट्सएप पे मिल जाए और मैंने ऐसे करके मेरा काम कंप्लीट किया। इसलिए मेरे लोगों का और विशेष का धन्यवाद देता हूँ और थैंक यू वेरी मच फॉर मीटिंग में टाइम। So as you saw, this is in fact a very speaking पत्रिका, इंटरैक्टिव पत्रिका, जहाँ पर आप लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं और आप सुन भी सकते हैं, पढ़ने के बावजूद, पढ़ने के साथ साथ आप सुन भी सकते हैं उनके विचारों को। अभी से जब लॉन्च किया गया है तो इंग्लिश और हिंदी में इसको लॉन्च किया गया है and it has already been translated in the other vernacular languages. It is now going to be distributed to all on WhatsApp, on Garuda app, through SMS, through email. It is going to be shared with everyone in different languages so that it can benefit everyone. And also would like to mention that it has been developed completely in-house by the Sweep division. We also have a small video to watch if you can show the video also. So I'm sure all of you will appreciate this video and appreciate Blo E Patrika. As I said, this is a very unique one, the first of its kind Patrika which we have, and it's a bi-monthly. So you are requested to continue to contribute towards it. And with that, I would now like to invite our Honorable Election Commissioner, Shri Anurag for his keynote address. Honorable Chief Election Commissioner Shri Rajiv Kumar ji, our senior DCs, DCs, our DGs, our Chief Electoral Officers, senior officials of Election Commission, BLOs, ladies and gentlemen. At the outset, on this occasion of the launch of Blo E Patrika, I compliment all of the 1 million BLO force that the Election Commission has in the field today. I compliment Nitesh Vyas and his entire sweep team for this innovative experiment. I compliment especially Shri Ram Kinkar Singh, the person who has been behind this and who's been pestering us for quite some time for coming out with this Blo vaccine. So it's an excellent effort. The election process, not only nationally but globally, has always been termed in India as one of the most efficient endeavors that has been taken. The electoral roll that we have is considered to be the most authentic document. And let me tell you, if we go to the states, to the districts, and I have been the chief secretary. So whenever we used to undertake any project,
So we always used to say, if you want to do it very efficiently, do it in the election mode. So the moment you say it is in the election mode, the word underlying with it, it has to be a very efficient operation. The credit for all this goes to one institution, and that is the institution of the BLOs. Ladies and gentlemen, give them a big applause. Most of the departments, the schemes are there. The beneficiaries go to the department. But in election commission, it is a commission which goes to the beneficiaries. It's a concept of doorstep delivery. Whether it be the electoral rolls or the epic cards or the booth management or the voter slips or any other thing, or postal voting. So it's a commission which goes to the beneficiary. And the link between the voters and the commission is the machinery of the BLOs. The genesis today, since I have been talking to the BLOs, so I would like to come out with the genesis of the institution of BLOs. 40 years back when we started our career as a small-time SDM. So I remember that every 5 years before the elections, the electoral rolls used to be revised. And at that time, whatever form collection or whatever survey it used to be done by the revenue functionary. In my state of Uttar Pradesh, we used to call it Lekpal. We still call it Lekpal. So they do it and supervised by a supervisor coming to. And this particular list, before every election, sometimes even annual, it used to be a printed document, but it was a list. In 1997, for the first time, a decision was taken to computerize this list. And let me tell you, that was an epic decision. Because overnight it converted that annual list into a database, a real database. And then it was in 2005, it was in 2005-2006, it was a photo electoral roll. And that was a time when it was felt that for a regular addition, regular deletion, regular change, you require a dedicated force, dedicated field level force. It cannot be done by somebody on a shifting basis. It has to be dedicated force, and the concept of BLOs started in 2006. And lo and behold, from that time onward, as somebody mentioned just now on the BLOs, that the BLOs have been entrusted with a lot of other responsibilities. Any department which needs to have more efficiency in the field, so they require the services of the BLOs. So the most efficient field level institution that we have. Now, I have been interacting with the BLOs during my field visits and for the last 1 year. And some of the issues, and today it's a good forum for me to interact with the BLOs, both in the video conferencing and maybe it's being video streamed also. So just interaction with them. So what is, how do we differentiate between an efficient BLO and an inefficient BLO? How do we evaluate that? What are the parameters? So when I've been discussing with them, the first thing I asked, and the COs also sit down there, the DOs also are there, the district election officers, and the BLOs also are there. And when I interact, I asked them, have you heard about the BLO triangle? So, not many people know about it. I said, where does he stay? All right, he stays at point A.
Where does he work? He works at point B. And what is the area assigned to him? That is a point C. So connect these 3 points, A, B, C. And all the sides of this triangle, they should not be more than 5 kilometers. 5 to 7 kilometers. And if it is more than that, then it is very difficult for the PLO if it is 20 kilometers. He is assigned an area which is 20 kilometers either from his office or from his home. It is very, very difficult for him to go on a regular basis. Howsoever efficient a BLO may be, you reduce the efficiency of that BLO. So please ensure that the area which, and that is not his fault, that would be the fault of the district election officer. So if DOs are there, the COs are there, please ensure that when we are utilizing our resources, we utilize them in an optimal way. In a way so that he gets some time really to visit the field. He doesn't spend all the time in traveling to and fro. So that was the first thing which I have been interacting with. Second thing is the training aspect, the capacity building. I have been asking the BLOs, what kind of training have you got? Whether you have got some training in digital literacy. So in my home state, Uttar Pradesh, and CO is there, we've been discussing with this how to improve the digital literacy of the BLOs so that at least they are able to operate Garud properly, operate various apps, the voter helpline app and other areas. So that is another thing. So other things are also there. So what about the field visits? So how many field visits is he doing? What is the pendency level? So all those things, I think there needs to be So what I'm saying is that the COs also need to be constantly in touch with the BLOs to ensure that the communication is done properly, the proper instructions are given, proper monitoring is done, and proper hand-holding is done. So in the commission, we have been regularly discussing this particular thing, how to improve the functioning of the BLOs, because if the functioning of the BLO increases, the effectiveness of the commission also increases. So whether it is the training part of it, and in our IIDM, the International Institute of Development of Democracy and Electoral Management that we have in Delhi. So they have been coming out with modules specifically designed for the BLOs, and now the national level trainers would be trained, the state level trainers would be trained, and on a very regular basis the training of the BLOs will take place shortly. So that is one part. And second thing is the communication. And this BLO magazine today is a very, very important component of the communication, because when we are talking about this today's magazine, you see it is a paperless interactive magazine. Paper magazines are normally they have limited reach, and since we are trying to focus on a pan-India reach everywhere, in every village, every polling booth, so it has to be a paperless magazine, which should be interactive, which should be available on your mobile, which you can read also, you can listen to that magazine also. It should be in your, not only in English, in Hindi,
but also in all the languages, the state languages also. So that is the concept of this magazine, and it will be taken every 2 months. And it is, the concept is, it is not only a magazine, it is a three-way communication. Three-way communication in the sense that first of all, it will carry the commission's instructions. So whatever instructions we gave today, we give it to the COs, the CO give it to ROs, RO give to BLOs. It takes a lot of time. So in this magazine, whatever instructions to the BLOs have to be given. They can be given straight away, they will be available on your mobile immediately. So that is something very important. Second, more than that, it is a platform for your feedback, for your success stories. So that immediately, whatever feedback, there are a lot of problems in the field. I went to Tamil Nadu and I found that the Garuda app, it was not working in Tamil, and BLOs were having some difficulty. So we immediately said, look, this is a problem and this was not being shared. So we said it has to be in, Garuda has to be in all the regional languages. So similarly, whatever problems are there, this could be a good forum, and I appeal to all the BLOs. If you have any problem, immediately you put it, and our editorial team will take it up, and it will be published here, and we will try to sort it out. So it is a very, very good forum for a feedback mechanism. And then third thing is, I would say it is an inter-learning platform. Inter-learning means the BLOs in one state are solving the problem in a different way, and BLOs in the other state can learn from their problems. So we learn more from each other because similar difficulties in different parts, and everybody, so many, 1 million minds working together, so you can learn from each other how this problem is getting solved in some other state. So it is an inter-learning platform. So I would basically say 4 things. 4 things is receive, transmit, interact, and respond. And these 4 things, this will be covered in this magazine. I wish you all the best. Thank you. Thank you very much, sir, for motivating and inspiring everyone. Your compliments for the E Patrika to the street team, and also inspiring the BLOs, the CEOs, your very innovative concepts and ideas which you shared with us, how they can improve their productivity and efficiency at the platform. और अब मैं माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार जी से निवेदन करती हूँ, मैं करती हूँ उनके उद्बोधन के लिए। Honorable Election Commissioner Shri Electoral Patrika, our senior colleagues on the dais, Senior Deputy Election Commissioners Mr. Dharmin Sharma ji on the left, Shri Nitish Vyas ji on the right, Madam DG Information Technology Neeta Verma ji, CEOs, officers, and the guests, and the most important participants of today's program, all are BLOs. तो सभी BLOs को स्पेशली अभिवादन और अभिवादन के साथ साथ धन्यवाद। और ये इसके अतिरिक्त अदर देन BLO एक डबल आभार और धन्यवाद और मैं देना चाहता हूँ, बिकॉज आप मोस्टली आप में से सब या तो टीचर्स हैं, तो दे डिजर्व आवर ग्रेटिट्यूड्स इन एनी केस, या फिर आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और ग्राउंड पे कार्य करने वाले लोग हैं, जिनके बेसिस पे पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था की गई है। सो दिस इज a very important occasion for all of us to connect with all of you who are basically the foundations and the building blocks of the entire administration.
So welcome to you. और मुझे कहने में बिल्कुल शक नहीं है कि 2 साल के अपने स्टे में कमीशन में मेरे लिए सबसे प्रसन्नता का विषय है आज कि आप लोगों के साथ डायरेक्ट संवाद करने का मौका मिला। And I'm really, it's the most happy moment for us to be able to connect to more than 10 lakh village level officers. It's not a joke. And this is establishing a paradigm shift in the way the administration will take place now. Not only in elections, but also. Connecting to you through a magazine means we are also connected to you through the various mediums of communication. जैसे अभी एक मध्य प्रदेश के या और दूसरे भी है उसने बताया कि उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, उन्होंने आपके साथ संवाद का एक डायरेक्ट माध्यम स्थापित किया हुआ। So that is what we are also establishing, a direct link to the ground level officers, and which will go a long way in not only reaching to you one way but also two-way communication, rather multi-pronged communication, as Honorable ACP EC mentioned, that it will be a communication amongst you also. Friends, as you know, our constitution begins with the phrase "We the people." We the people is what is the foundation of the democracy, and who is linked to those people? It is only the BLOs who are linked to those people. So you are joining those people through the election commission, through the democracy, to the government. और अगर इंडिपेंडेंस इंडिया में कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस और ऐसी उपलब्धियों की बात की जाए which are the foundation of the country, democracy would be one, success of democracy would be one. And that is only because you are all have been able to link to the people and to make them a voter, which is giving an expression of their choices during the elections. There are various challenges we understand while you perform your job. And it's a huge force of around 10.37 lakh legislative access. It's not a small number. Dealing with this, interacting with this and reaching our points to this 10.37 is not a small number. और ये इस तंत्र की एक सुदृढ़ता को प्रदर्शित करता है कि आपके साथ किस तरीके से हम एक तरीके से पूरी कंट्री में अपनी बात पहुंचा पाते हैं और आप उसी तरीके से वोटर पूरे देश में बनाते हैं। ये मतलब मजाक का विषय नहीं है। जो आप नॉर्थ में करते हैं वही साउथ में होता है, वही ईस्ट में होता है, वही वेस्ट में होता है। भाषा कैसी भी फर्क हो, व्यवस्थाएं कोई सी भी फर्क हो, लेकिन आपके काम में कोई फर्क नहीं होता। जब कमिश्नर साहब आपको एड्रेस कर रहे थे तो मुझे मन में आया कि मैं विचार आ रहा था, तो मैंने कुछ लिखा है आप लोगों के लिए बैठने में, उसको मैं बोलना चाहता हूँ। डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र का आधार है, उसमें निर्वाचन आयोग के स्वरूप के रूप में आप साकार हैं, यानी यू आर द फॉर्म ऑफ द कमीशन। Commission has no existence in the field. It's only a red building which is shown all the time. So who represents the commission? Who gives it a form? Who is a sakar? It is only you. तो कमीशन के स्वरूप में आप साकार हैं और कमीशन का आप व्यवहार है। How do you interact with people makes the commission good or bad. And I would say here, it's not only with the commission. जब भी एक सिटीजन 18 साल का होता है तो सबसे पहला किसी भी सरकारी तंत्र में पाला उसके घर जाके आपका पड़ता है। तो वो एक धारणा अपने मन में बनाता है कि सरकारी तंत्र कैसा है। I mean, this is the first interaction with a government servant, that too, not on his asking, but you're voluntarily you are going to his place, so he forms an opinion कि सरकारी लोग कैसे होते हैं। So आप साकार हैं, आप व्यवहार हैं और आप कमीशन की दृष्टि और स्वरणी हैं। We learn through you and we also speak through you. आप साकार हैं, आप व्यवहार हैं, आप दृष्टि और साकार हैं, इसलिए आप सबको अत्यंत आभार है। Really a pride
proud and a very happy moment to be connecting to all of you. कुछ घटनाएं याद आती हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, दृष्टांत के लिए शायद सबको नहीं पता होगी। एक पंजाब की घटना है। हमारी एक वोटर थी विधावली, हमारी पुडुचेरी की, सोरापत 101 ईयर ओल्ड। ये लोग जाके घर गए, जब सुविधा प्रदान के लिए वोटर बनाया तो आप सोच सकते हैं उनके चेहरे पर किस प्रकार की एक प्रसन्नता आई हुई। इसी प्रकार से एक हिम्मत, वो उनको किसी कारण से पीडब्ल्यूडी 1950 डायल करते करते बीएलओ साहब तक पहुंची और घर जाके जो बनाए वो क्या हुआ। तो दिस focus of the commission now on the senior citizens, on the PWDs, on the transgender. आप सबको, you are all so much an integral part of the society. You know how much society is changing. What is the situation of the elders also in the houses is changing. You all know it. You all know how the society is looking and treating the PWDs. किसी को थोड़ी सी भी कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसको किस तरह से समझती है। Look at the transgenders, how we treat them. And commission through you has taken initiatives and want to further take stronger initiatives that we, from the election point of view, as a voter, show them full respect. जैसे अभी मध्य प्रदेश में बताया, ऐसी सब जगहों में सीनियर सिटीजन्स डे पे और अदरवाइज भी जब कमीशन कहीं जाता है तो हम समाज के जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो वृद्ध हैं, उनको विशेष रूप से आभार देना चाहते हैं। वही आज जो हम यहाँ बैठे हुए हैं उन्हीं की वजह से, ऑल सेड एंड डन, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ देम। They have voted, they have made the democracy stronger, they have participated, they have contributed in whatever capacity, whatever way they would have. We would not have reached here. You all remember your childhood, we all remember our childhood, we are almost at the same age in plus 50s, 40s. जो समय था पहले, जो आज है उसमें बड़ी परिवर्तन है। So, it is our duty. And I am very happy that all VLOs are very sensitive now towards the senior citizens, towards the PWDs and also towards the handicaps. Not handicap, towards the PWDs. So, another thing which I wanted to mention is the way the technology is changing. What are VLOs doing actually? VLOs are having the record of all the citizens voters of the particular booth. And as the friend from Alvar mentioned, that during COVID this role got extended to the COVID, helping the migrant laborers. Because you are working so well in the field that the delivery of services to a very large extent is also routine. अब मैंने मेरा जितना इंटरेक्शन है लोगों से और जितना मैं गांव में जाता हूँ, काफी जाता हूँ, वीएलओ की एक डिफरेंट इज्जत गांव में। You will all agree with me. There is nothing which can happen now without the VLOs. Even caste certificates, even the recognitions, even COVID times, election, voter. So you have created a space for yourself, an identity of yourself in the field. You are a very, very important person. You don't recognize how important you are to the political system, to the candidates, to the ward commissioners, to the panchayat fellows. I asked few bureaus in the field privately if there was an option, would you like to get changed? Majority of them said no, sir. What we would like is that some facilitation happens, as the Honorable EC mentioned, that in terms of distances or places or postings and this kind. But we want to contribute. And therefore, this special place which we have earned in the society is going to further get strengthened, believe me.
Let me tell you how. Or the way the technology is changing. What do you think? As I took you 30, 40 years back, over 20, 30 years down the line in future. This building block, what is the e-commerce today? The e-commerce building block is the database of some particular job. Acquisition of customers as they call it in the marketing. तो इसी प्रकार से उस पर्टिकुलर विलेज का या बूथ का सारा एक्विजिशन सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, जिसकी वजह से आप एक धुरी बनने वाले हैं टेक्नोलॉजिकल टर्म्स फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एनालिटिक्स, ऑल काइंड्स ऑफ डिलीवरी, एंड दैट इज इन द इलेक्शन। इस लोकतंत्र का पूरा जुम्मा है वो आपके इस व्यवस्था में टेक्नोलॉजी के थ्रू और स्ट्रेंथन होने वाला है। Therefore, it's a very important job which you are doing. We will keep informing you about the technological developments. We are undertaking a whole lot of changes in the way the facilities would be given to you. Like it will all be in your vernacular. We are also planning that when you fill up a name, many things gets auto-populated. आपको भरनी ना पड़े। जैसे अगर आपने पहले से फॉर्म किसी का वोटर है वो चेंज के लिए अप्लाई कर रहा है, एक नाम भरें तो सारी चीजें अपने से आते हैं। वो लॉट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर हैपनिंग, जिसको आपको स्लोली अगले 2-3 महीने में बताएंगे और हम इस पत्रिका के माध्यम से। तो पत्रिका की इम्पोर्टेंस इज सो क्रिटिकल एंड आई ऑल्सो ज्वाइन the Honorable EC thanking the sweep team and Mr. Arun Singh in particular and the EC himself in particular, because he has been driving himself this initiative. So a big applause to him also. He was kind of personally behind this, having handled the communication in various places and had positions. He knew the importance of this. And both of us never miss any field visit when we do not India. So your job is well recognized by us. We understand how do you take the EVMs to the field, how do you conduct the training. और EVM को ट्रेनिंग के लिए फील्ड में ले जाना अपने आप में कितना बड़ा जोखिम का काम है। लोग तो इंतजार करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई फोटो निकाले और सेंसेशन पैदा करे। आपको मालूम होगा पिछले 10 इलेक्शन हो चुके हैं हमारे लिए, 3 घटनाएं घटी हैं ईवीएम्स में, जहां प्रिजाइडिंग अफसर साहब लोग उसको लेके किसी मजबूरी वश इधर उधर जाना पड़ा। तो कितना बड़ा उसका बड़ा, और उन ईवीएम्स को लेके आप गांव-गांव जाते हैं, गांव-गांव में जाके लोगों को सिखाते हैं कि कैसे वोटिंग करनी है। दिस इज नॉट ए इजी टास्क, वी ऑल अप्रिशिएट इट एंड अंडरस्टैंड दिस। अंत में बातें तो बहुत करने का मन है, सुनने का भी बहुत मन था आपके साथ, लेकिन अंत में मैं आपको विश्वास दिलाते हुए कमीशन की तरफ से कि हमारे पूरे व्यवस्था के अंतर्गत आप सबसे इम्पोर्टेंट करेंगे, आप ही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और आपके साथ में हमारा ये संवाद आने वाले दिनों में और सशक्त और बहुआयामी होता चला जाएगा। वी विल इंटरैक्ट विद यू इन मच मोर in the density, in the layers in which we interact with you, and we will look forward to working with you and making you as strong as possible. And believe me, you will always be the founding block of this democracy in the country, which is the biggest democracy in the world. And the entire world is looking towards us now in terms of the functions which we do in the democracy. Let me inform you this part also. There is a democracy summit which is taking place worldwide. The democracies of the world are coming together. And we in the Election Commission are leading one of the cohorts which is the election integrity. इलेक्शन को किस प्रकार से बहुत ही सशक्त तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से, फेयर तरीके से करा सकते हैं। More than 1 crore people who get involved into this. You are only 10 lakhs. There are 1 crore who gets involved into this all over the country when the elections takes place. And it happens exactly like a clock with that precision agreement. So your
dedication to the duty, the way you are working, would really go a long way in making our democracy far more stronger and strengthy and resilient. Thank you very much. Dhanyavad. Thank you very much, sir, for the very motivating and enthusiastic message of yours और एक कविता के माध्यम से जो आपने अपनी मन की बात और अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर रखी, यकीनन उससे सभी में एक नई ऊर्जा और गति मिलेगी अपने कार्य को और अधिक एफिशिएंटली करने के लिए, enthusiastic करने के लिए. Thank you. And as we conclude this special event, now I would like to request Santosh and Meeraji that to speak to kindly propose a formal vote of thanks. Good afternoon, all of you. So it is an honor and privilege for me to give a formal vote of thanks today. Sir, we are really grateful for the Honorable Commission for its vision towards BLO interaction and launch of BLO Patrika today. The entire program is visualized, envisaged and conceptualized by the Honorable Chief Election Commissioner Shri Rajiv Kumar sir and Honorable Election Commissioner Shri Anurag sir. Sir, it is, I think, probably the first ever time that the Honorable Commission is interacting with the field level machinery directly like this. The Commission has itself envisaged this entire program of the Blo E Patrika and interaction with the BLOs at the ground level. Now we can see the result of this today. Even Honorable Commission has launched, while launching this Blo E Patrika and interacting with the BLO, it's highly inspiring for all of us to get such an opportunity for every individual working at the field level to interact and listen to them directly. It's an honor for every one of us, sir, today. Thank you for your valuable time, your vision, your love and care and compassion towards your own people, and your valuable support for ACS all initiatives. Thank you, sir, once again. Sir, no initiative could be organized without a leader at the field who will work and plan the event as per expectations and the vision of the Honorable Commission. Sir, I think Senior Deputy Election Commissioner Shri Nitesh Vyas, sir, has ensured everything goes smoothly through his planning and attention to details. He ensured that every dots are being connected and everything fall in place as desired and as planned. So thank you for driving this entire team of speed from the front. Now, Senior Deputy Election Commissioner Shri Dharmendra Sharma sir, Director General Shefali Sharan ma'am, Deputy Election Commissioner R.K. Gupta sir, DG IT Neeta Verma ma'am, OSD IT Shri Srinivas sir, and the entire team of senior principal secretaries like Butolia sir, Stand-up sir, principal secretaries, all the concerned directors and joint directors. We all are grateful for your entire support towards the sweep division, towards making this Blo E Patrika. Further, our CEOs from the entire country, we are really thankful to you for having your support as always in coordinating the event and ensuring that it reaches to the last mile through the network of BLOs. Thank you CEO Delhi, CEO Rajasthan and CEO Uttar Pradesh who are present in person today as a representative of all the CEOs from entire India. We are also grateful to the entire IT team, entire protocol team, media team, the event management team which is there and the sweep team. The team led by Senior Consultant R.K. Singh and the Secretary at the Sweep Division Mr. Amit Kumar. The sweep consultants, the division officials who have made this work a reality. This bi-monthly Patrika would be produced now 2 months, one time in 2 months. And this entire Patrika has been produced and designed and edited. Everything has been done in-house. So thank you entire sweep division and the sweep team for this wonderful work which has taken a shape in reality because of all of you. Also, I am thankful to the editorial board of Blo E Patrika for its timely inputs and suggestions which they have given in time, sir. Because of this, because of it, we could actually produce the BLO.
tireless effort at the field. Thank you for your valuable time and your entire work. Thank you for joining us today here as well as virtually. And we are also thankful to the media people who are present during this event. Thank you. Thank you. And with that, as we conclude this special event, as we mentioned, this is in fact the beginning of many new beginnings. और अधिक संवाद आपके साथ कम्युनिकेशन की एक शुरुआत है और ये जारी रहेगा. तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद इसे सक्सेसफुल बनाने की तरफ. सभी BLOs जो हमारे साथ ऑनलाइन भी कनेक्ट हुए, जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, शुक्रिया, धन्यवाद. कमीशन का विशेष रूप से धन्यवाद. और खत्म करने से पहले एक ग्रुप फोटोग्राफ आप सभी के साथ करना चाहेंगे, तो आपको मैं यहाँ पर मंच के सामने आमंत्रित करती हूँ. कमीशन